Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktavinda। एक बार सभी हाथ उठाकर मेरे साथ कहिए, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। एक बार जोर से, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। श्रीमद् भागवत कथा चतुर्थ दिवस। भगवान श्री जगन्नाथ जी की कृपा से और गुरुदेव के आशीर्वाद से बराड़ा के इस सुंदर भागवत के स्थली पर आप सबका विशेष स्वागत है। ब्राह्मणों की समाज में बैठकर और भक्तों के निकट बैठकर हम लोग बड़ी सुंदर भागवत की कथाओं को श्रवण कर रहे हैं। हम लोगों ने कल ये श्रवण किया कि कैसे सुखदेव गोस्वामी Hare Krishna. Today is fourth day of Srimad Bhagavat Katha. So yesterday we listened about how Shukdev Goswami ji came in the association of Vaishnavas, and everyone stand up and respected them. And Parikshit Maharaj also started asking questions from Shukdev Goswami ji. सृष्टि प्रकरण के संबंध में वर्णन हुआ है। थोड़ा सा बस ध्यान से सुनना। हम आज लीलाएं भी सुनेंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले ये समझना, सृष्टि कहां से हुई। ब्रह्मा जी का जन्म, so from where the universe started, Brahma ji took birth from the navel of Krishna Bhagwan, just like a child took birth from the stomach of the mother, and umbilical cord is connected to the mother and it is being cut and child is separated. Similarly, Brahma ji was also connected to the Bhagwan with that umbilical cord, and that never that umbilical cord is that 14 representing the 14 universe. And Brahmaji is not able to understand from where he took birth, and when he was wondering from where he took birth, he listened to, he was hearing three words, that is tap tap tap, and from that he understood that he has to do tapasya. And Brahma ji did tapasya for thousands of years, and after that Bhagwan ji got pleased from Brahma ji. So if we don't do any pain, don't go through any pain, we will not gain anything. So to earn something, we have to go through our pain. Just like we just to eat something good, we have to cook food, and while cooking food, the person who is cooking has to go through pain and heat everything, and after that that beautiful and tasty food is cooked. So without any hard work, even the food cannot be cooked. The persons who are going outside to do work is also one of tapasya. To earn money, they are doing hard work.
So unless and until we do hard work, we will not be able to make anyone happy. और ये तपस्या तो भगवान के उद्देश्य से की And जाती है। through and this hard ब्रह्म work, के this tapasya पूरी done by भगवान के Brahma लिए ji was to please Bhagwan. So तब it भगवान took thousands of years of ब्रह्मा hard जी से work. After प्रसन्न that, होकर Brahma ji was able to please अपने Bhagwan. वंशी से And when उनको वर प्रदान Krishna किया। Bhagwan got pleased, he बहुत सारे वरदान gave अनेक mantra through his flute to Brahma ji. That is the word kling. ये बीज मंत्र है It is क्लीन। the seed mantra और साथ of ही साथ ब्रह्मा everything. जी को शिक्षा प्रदान And not only he has given mantra to Brahma ji, also भगवान given ब्रह्मा shiksha जी के and माता knowledge जी तो to होते ही Brahma हैं। ji. So Krishna Bhagwan ji is ये है not हमारे only गुरु mother of परंपरा। Brahma ji, he is also guru of Brahma जहाँ ji. से नाम लिया जाए, दीक्षा ली जाए, From where पहले the ये name जान and लेना diksha चाहिए कि is उनकी taken, कोई गुरु परंपरा है कि नहीं है। one should know that from where they are taking the naam and diksha. आपको तो पता ही होगा। If we are taking naam and diksha from someone, we बाजार should में know टमाटर is में there खरीदने any जाते guru हैं तो ऐसे parampara, लिखा there होता is any legacy behind that guru who is है, giving you नाश्ता नहीं name खाना। on diksha. कोई भी चलेगा For गलत example, we go to the vegetable market to buy something, some इसलिए जहाँ vegetable. पर We नाम लिया see जाता है, is the vegetables कुछ good or बताया not. जाता है, Similarly, तो उसमें गुरु परंपरा होना the देखना naam पड़ता है and diksha, if we are taking, we कि should उनके गुरु know जी कोई हुए हैं from where we are और taking it उनके is गुरु जी good or नहीं not. है और Is किसी the के गुरुदेव हुए हैं, from the gurudev we are लेकिन ये taking तो गुरु परंपरा है। have their gurudev, ये and शिक्षा that है, gurudev गुरु also have परंपरा से प्राप्त है। forefathers, four gurudev. यदि That वो is the we दीक्षा have to और check the शिक्षा legacy of guruji. गुरु से प्राप्त नहीं है, परंपरा से प्राप्त नहीं If है, तो गड़बड़ the है। name and diksha given मेहनत by करते जाओ, gurudev is करते जाओ, not करते जाओ, कढ़ाई में पानी डाल got दो, by that gurudev from एक the तड़का legacy डाल of देना, guru parampara, बनेगा नहीं, then that पूरा name and जीवन diksha उसी is तरीके ही बन जाएगा। useless. It is कढ़ाई में of पानी no डाल के meaning. बंद कर दो, Just like while फिर cooking छोड़ food, दो, if we add some तरीका है jeera and गुरु परंपरा। masalas directly to the water, they are not and add ऐसे ही vegetables, the vegetables are not going to cook. जिस There is some संप्रदाय process, में that है, is we have to add oil first, वो then भगवान other कृष्ण vegetable के and jeera. संप्रदाय है। Similarly in कृष्ण guru ने parampara ब्रह्मा जी को also we मंत्र have दिया, to see the process, that is ब्रह्मा their जी ने legacy, नारायण that को दिया, Krishna Bhagwan given नारायण ने वेद giving व्यास name को to दिया, Brahma ji, then और Brahma वेद ji व्यास जी ने to मध्वाचार्य जी को uh, दिया, uh, और उन्हीं मध्वाचार्य जी यहाँ पर ये गुरु परंपरा से then from हमारे Brahma गुरु ji जी to तक the ये सारे later मंत्र on और to ये सारी शिक्षा Madhvacharya ji, एक के then बाद एक through निकलती जा रही है। Madhvacharya ji to our Gurudevs, Param Gurudevs. श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को मंत्र दिया और साथ साथ शिक्षा भी प्रदान की। Krishna Bhagwan is not only giving mantra to Brahma ji, but इसी also शिक्षा giving को कहा गया knowledge and चतुश्लोकी shiksha to भागवत। Brahma ji, and that ये चार knowledge is श्लोक उच्चारण कर लो, known as Chaturshloki संपूर्ण भागवत Bhagavat. लिखी That is होगी। 4 shloks Bhagavatam. If we are आज if जो we speak भागवत चल रहा those है, 4 shlok जो Bhagavat, भागवत जी it लिखी is जाती है, complete पहले Bhagavatam. 50 श्लोक की होती थी, Before nowadays we see उसी का 18,000 shlok विस्तार में Bhagavatam, कथा दिया गया तो but सुनत before सुनत। that 4 shlok Bhagavatam came, वो and that चार 4 श्लोक shlok भागवत Bhagavatam is expanded to 18,000 चार ऐसे shloks. सूत्र हैं That 4 shlok Bhagavatam जिसका is a विस्तार ही करना है चार श्लोक base of Bhagavatam, and that is being और जिनको expanded श्री to this कृष्ण ब्रह्मा जी 18,000 प्रदान shlok, करेंगे। and it is being provided by चतुश्लोकी Krishna to भागवत। Bhagavatam, that is Chaturshloki Bhagavatam. अहम एवसाम एवाग्रे नान्य सत्सच्च परम पश्यत अहम यो अवशिष्यति सो अस्मि अहम ऋते अर्थम यत् प्रत्येक न प्रत्येक च आत्मनि तद विद्ये आत्म माया यथा भासो यथा तमहम यथा भान्ति भूतानि भूतेषु चेष्वरुहम परिविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु गतेषु इतान एव जिज्ञासा तत्व जिज्ञासमात्मनम् अन्वे विधिकायन यस्या सर्वत्र सर्वदा। 4 श्लोक हो गए। चलो जी भागवत समापन हो गई, प्रसाद तो घर चलो, बोलो भागवत महापुराण की जय। आनंद आया 4 श्लोक सुनकर। So Gurudev now spoke about four shlokas of Bhagavatam, and this is a complete Bhagavatam. Did we get any happiness and pleasure from this? No. That's why this 4 shloki Bhagavatam is being expanded to 18,000 Bhagavatam, so that we can get anand and attachment to Bhagavatam. सब कुछ प्राप्त करके फिर सेवा की भी इच्छा करता है, तो सेवा भी तो मिले।
क्योंकि बिना सेवा के तो जीवन बिल्कुल एकदम व्यर्थ है। प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास कोरी वेतन मोर देह प्रेम। So when Brahmaji got Diksha from Krishna Bhagwan, he asked for seva, what seva he can do for him. So Gurudev is explaining, when Gurudev give you something, then Shishya always ask for the seva from Gurudev, that what seva I can do for you. And without seva, we will not be able to get real attachment and happiness. So the real main thing that we can do is seva only. And बस अपना दास बनाकर प्रेम मुझको देते रहो, अपनी सेवा देते रहो। and in return of that seva, what we ask from Guru Dev and Bhagwan, that I want salary on in exchange of seva I will be doing. Then Bhagwan is asking what salary, that is salary he is asking is that I want a prem and attachment and your charan seva in return of the seva I will be doing. तो मेरे सेवक ये 5 मूर्तियां भी मुझसे नहीं मांगते। So Krishna Bhagavan is saying, can I give you mukti, liberation? There are 5 type of liberation. Should I give you that? Then Bhakt always say no to the that liberation. That I don't want liberation. Instead of liberation, what I want prem, love and affection from you. विवाह करवा दो, कभी ऐसा सोचा भी? मेरा कोई व्यवसाय बिजनेस चल जाए, ऐसा कभी विचार किया? क्या मांगा? बस सेवा देते रहो। So Bhakt always keeps on asking seva. Here also he is giving example of Hanumanji. Did Hanumanji ever asked that he want his business should start, his home should be built, he should get married to a beautiful girl? He never asked for anything like this. He always asks for seva from Ramji, that is his charan seva. So one day, what happened? Ramji asked to Hanumanji, "You take rest for one day, and today all seva will be done by other persons." Like Bharatji started serving their feet, and Lakshmanji doing something else. Then Hanumanji came to Ramji and said, "I am not feeling happy without seva. I want to do seva." So without seva, what he is feeling empty in his heart. So this seva is not done forcefully, it is done out of love and attachment. So we always keep on asking, just like a poor person, a beggar asks for money from the rich person. Similarly, the shishya always beg for seva from Gurudev happily. हम सुन रहे हैं हनुमान को कोई सेवा नहीं मिली, बेचारा तड़प रहा है, मेरे पीछे पड़ गया, एक सेवा दे दो, एक सेवा दे दो, कुछ तो। Then Ramji called Lakshman and said them that Hanumanji is begging for seva. So then give him some little bit seva. Then Lakshmanji said that we will giving you seva. Hanumanji, you should beat your fingers. Then Balramji is saying, sorry, Hanumanji is saying that why are you asking to do me this seva? विश्राम करना है, हनुमान जी छुट्टी बजा रहे हैं, रुकते ही नहीं। So Hanumanji is beating his fingers outside the door of room of the Ramji. Then when the Ramji started sleeping, he was not able to sleep because Hanumanji was continuously beating his fingers. बिना सेवा के शिष्य रह नहीं सकता, So without seva, Shishya cannot live. वाह, सब एक जैसे नहीं होते। So there is the Shishya is of only one type. All Shishyas are not of same type. There are different type of Shishya. There is a first type of Shishya that is known as Uttam Shishya, topmost Shishya. गुरु जी की बात का विरोध करके भी गुरु जी की सेवा करता है। He is that type of Shishya who goes against Gurudev and goes opposite to the Gurudev, and still he do seva of Gurudev.
गुरु जी का विरोध करके भी गुरु जी की सेवा करता है. He goes ऊपर से against विरोध Gurudev. करता है लेकिन भीतर से From the प्रेम है. front, we will see that he is going against the गुरु जी Gurudev. कुछ मीठा खाना But चाहते हैं तो उसे even छू के हाथ से he is पूछ लेता है, going नहीं against आप Gurudev, he खाएंगे is नहीं, doing that seva. यहाँ Just सिर्फ like वहां से he नहीं is मिलेगी. snatching any उत्तम sweet शिष्य. or sugar from the Gurudev. It looks like he गुरु is जी going डांटते against हैं, the Gurudev. नहीं तो Gurudev is बात saying, सुनता नहीं no, आपको, you keep this sweet here. I want to तब भी eat नहीं that पकड़ता sweet. है. Still, he don't give क्यों? that sweet to नहीं Gurudev. पकड़ता. Why? Because he loves his Gurudev so much and knows that that sweet is not good फिर for एक दूसरा that शिष्य Gurudev's जिसको health. कहते हैं मध्यम शिष्य. Then second type of shishya is known as madhya shishya, मध्यम शिष्य कौन सा होता है? middle one मध्यम शिष्य shishya. वह शिष्य Who होता is है that shishya? जो गुरु जी के आदेश के बिना ही उनकी आज्ञा का पालन करता है. Who follows Gurudev कहना नहीं पड़ता instruction गुरु जी को, without वो even इशारे से ही Gurudev समझ is जाता है given कि उसको पानी instructions to चाहिए. him. अगर He जो कोई बोतल understands चाहिए, himself that अगर उसको now प्रसाद चाहिए, Gurudev wants water, अगर किसी से food, मिलना है, he wants बोलना this नहीं पड़ता. granth, he wants, उनके मन के he भाव has to समझ meet to लेता any है person. और He बिना कहे understand ही it उस आदेश को without पालन any करता है. instruction बिना given कहे. by इसको Gurudev. बोलते हैं मध्यम This शिष्य. shishya is known as middle समझ आया? one shishya, that is madhya उत्तम shishya. वो होता है जो So first one was आदेश का Uttam Shishya, उल्लंघन करके भी गुरु जी की सेवा करता who है. was that? Who goes against the Gurudev and मध्यम still वो do the जिसको कहना seva. नहीं पड़ता, And then गुरु is जी middle की one सेवा कर देता है. who serves Gurudev और without कनिष्ठ even कौन सा getting होता है? instructions. जिसको बार बार Then बोलना there is पड़ता है, third one who समझाना is पड़ता है, सेवा Kanishta तो करता है Shishya, that is lower one लेकिन Shishya, बार who बार is बोलना पड़ता है. who जैसे has to गुरु be जी ने कहा बेटा instructed by Gurudev यहाँ again से and एक गिलास again पानी. to गुरु जी make him कभी लाया, serve. For example, Gurudev asked जबरदस्ती Shishya, लाया, I want लेकिन to लाने का have तरीका water. बताया. Then Shishya said, I will bring now. गुरु जी ने कहा Then गर्म नहीं है. he ran to bring अच्छा, water. Then he came उसी back ने कुछ halfway शब्द and किया, asked गर्म Gurudev, लाओगे should I ठंडा लाओगे. bring hot water or cold water? अच्छा चलो, बहुत चिंता करता है. Then बेटा कोई भी ले आओ, बहुत तेज प्यास then लगी. Gurudev said, bring अभी any लाया water. I just want to तो drink water. I am फटाफट feeling निर्भर very करके thirsty. Then he ran away and came back बोले again. अब क्यों आया, Then Gurudev ये asked, पूछो what's तो क्या. the question? चांदी Then के गिलास Shishya लेकर said, आओ तो should I शुद्ध भी bring it करेगा. silver बोले glass भैया or कोई भी gold गिलास नहीं glass? चलेगा, तो पानी Then पिलाते गर्मी Gurudev है, said, कोई गलत bring नहीं in कर. any glass. I am feeling उन्होंने thirsty. वही लाया. Then he ran again to bring water. फिर दौड़ कर गया वापस Then he आया, came बोले अब back to क्यों the आया. Gurudev and asked, नहीं ये पूछने आया, should I उबला हुआ पानी bring चलेगा, boiled ठंडा water चलेगा, or सूखा या tap फिर water, बिस्लरी or पी should लेगा. I bought Bisleri water for you? बोलते भाई कोई भी चलेगा, Then पानी Gurudev लेना. say, any दूसरी water बात will गया work, तो just तुरंत bring नहीं. water. Now जब Shishya गया ran वापस again गिलास and उसके came हाथ back में, बोले again अब क्या and करना asked है. Gurudev बस बस एक that लास्ट बात. this is my last question, वो जो गिलास that लाऊंगा तो ट्रे पे should I लाऊं या bring हाथ में that ले लूं. glass in a tray or by straight बोले तू in बैठ जा, मैं hand पानी ले only? लूंगा. So Gurudev इसका said, मतलब है now you just sit down, I will take water again, you don't serve me. इसको बोलते हैं So कनिष्ठ. this type of जो Shishya is समझ known नहीं as सकता, Kanishta Shishya, who cannot सिंपल क्वेश्चन understand समझता है things easily. He लेकिन want to समझ नहीं serve, सकता. but he is so low इसको in कनिष्ठ mind that कहते हैं, he is सबसे not able to छोटा. understand things लेकिन easily. इससे नीचे वाले भी और हैं, But there are some more उसको बोलते हैं lower अधम Shishya, सेवक. that is below this Kani Shishya, उसमें known एक as है जिसका Adham नाम, Sevak. जिसकी एक कैटेगरी श्रेणी है, उसको कहते हैं बान. And there is one more बान category, समझते that हैं, is Ban धनुष Sevak. बाण होता है ना. बाण एक बार चला जाए लौट के नहीं आता. So गुरु what जी is ने शिष्य Ban? से Ban बोला is बेटा एक bow. काम करना, Bow, just ऐसा like गया arrow 1 comes महीने out तक of the जिंदा bow, नहीं it है, never comes back. लौट के नहीं आया. So this चला गया Ban बस. Shishya is that Shishya who goes for one time and never come फिर back. एक और है जिसको बोलते हैं अली, मतलब There is one more category, भवरा. that is भवरा समझते Ali, हैं. who is known as भवरा क्या Bhavra. करता है, Bhavra is bee. पुष्पों पर गुलजार करता है. What bees do? It goes on the ऐसा flowers करता है. and do the sound तो like शिष्य भी ऐसा, गुरु जी बोलते हैं बेटा ये काम So कर दो, तो that गुलजार Shishya is करता known है. as Ali Shishya. Why? क्या Because whenever सारा Gurudev दिन asks छुट्टी ले लें him to do और इतने something, सेवक बैठे, he start doing सारा काम उनको दिया जाता है that is, he और started इतने और saying, हैं, why उनको कोई Gurudev नहीं always देते keeps on giving me और seva. गुलजार There are करता so है. many Shishyas, they सेवा can नहीं give करता. him to seva to that also, but he never do any और seva. इसमें He एक just है keep on सबसे saying नहींसा, things. सबसे कम बुद्धि वाला, उसको And out बोलते हैं of all नहींसा this, कबीर. there is one Shishya who is समझते हैं of नहींसा कबीर, lowest जो दोनों दोस्त ऐसी buddhi मीठी मीठी mind. बात सुनाता है, कुछ
who is also known as what is being said, he is doing it just directly and not using his mind, not even a single point. If Gurudev asked him to go straight, he keeps on walking straight. He will not even see that even home or bus or something is coming on the way. He not going to stop. For example, once Gurudev asked to the Shishya that I am going for the sleep, and I'm going for the sleep, and just see that mosquitoes don't come around me. And then Shishya asked, what if mosquito come? What should I do? Then Gurudev said that just kill that mosquito. Then that Shishya sit nearby the Gurudev, and Gurudev was sleeping. And he kept on staring around that is there any mosquito coming? Then a mosquito came on the face of Gurudev, and just to kill that mosquito, he slapped Gurudev. So this is known as he has not using his mind. He is just serving Gurudev as he is asked. और शिष्य दोनों गांव गांव में प्रचार कर रहे हैं। He's giving one another example that there are one Gurudev and Shishya who was doing preaching in different villages, and to go to the different villages, he was using a horse. And Gurudev was that I will go in front and you come at back, and everything goes on the horse, and just keep on saying that if something falls from the horse, just take it and put it back. Then Shishya said, okay, I will take care of that. Now Gurudev is going in front and Shishya is coming at back. And when they were crossing the village, and when they were crossing the village, the horse uh, urinated, and Shishya thought that Gurudev asked me when whatever will come out I have to pick. So he ran and picked the urination done by the horse, and he picked it up and so it to Gurudev that then Gurudev asked, are you mad? I have not asked you to pick this thing. Then then Gurudev said, you are so mad, just use your mind and intelligence, that if anything falls off mine things fall, you just have to pick those things. बुद्धि बटे ढाई मेरी कोई चीज। So now Gurudev is saying that you just have to pick those things which belongs to me only. So now Shishya is saying, I am not able to understand what I should pick or not. You just make a list of the things, which all things you have, and I will pick only those things. Then Gurudev, then Gurudev provided the list to his Shishya and said that if anything from this list, beyond this list fall, just don't pick it. Then in list he mentioned that I have 2 plates, 2 spoons, 2 dholak, 2 kartal, this much clothes, everything was mentioned in the list. And now Shishya said, I am determined now, and I know what I need to pick and what I don't need to pick. Now Gurudev started walking again, and Shishya was coming at the back. Now they crossed another village, and when they reached the village, there was a bad road, and there was a hole in the road, and then because of that hole, horse slipped and Mata and Guruji fall from that horse in the hole. And now Shishya saw that his Gurudev has fallen from the horse, and Shishya is going ahead, and Gurudev from back Gurudev from the back saying,
just stop. Just stop. बोले uh, अरे रुक जा और ये जो just इलाका stop. है And ना, but that shishya देख is रहे हो not इसको, stopping. He's seeing that his चांदी Gurudev शिष्य is है। is fallen, and he's watching the बोले list तू कितना अच्छा and था, saying that your name is निश्चित not से वहां mentioned पर in the नहीं list, लिखना and है, I will not going to pick you आपका up नाम तो कहीं नहीं लिखा है। because you said that I don't need to pick anything beyond आपका this नाम तो list. इसमें लिखा नहीं So है, you have not mentioned your name. आपका नाम लिखा हो तो जरूर उठाता, If आपने your इसका नाम name नहीं would लिखा। have been mentioned फिर in the बोला list, ठीक है, I तो would आपका have नाम तो picked you वहाँ है, up. And if तो I अपने will pick you up, इमरजेंसी then you will say इमरान I am शिष्य not बन using गए। my intelligence and आपकी mind. ऐसी सेवा करूंगा, याद रखो। बोलते तू जा भैया, जा। So Gurudev asked him to go back. ऐसे शिष्य So these है, shishya are known as थोड़ा सा लगाने के लिए lowest बताना shishya, पड़ता है। who never use their mind and अब क्या intelligence. करें? भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया। So Brahma ji was given Chaturshloki ब्रह्मा जी Bhagavatam का वियोग Upadesh क्या है? knowledge by Krishna क्या सेवा Bhagwan. करें Then सृष्टि करो? Brahma ji is asking Krishna Bhagwan, ब्रह्मा जी ने what आपको should I सृष्टि do करने as को दिया, seva? Then Krishna Bhagwan अपने मन asked him से to सृष्टि do करने को the दिया। universe, create this भगवान universe. सृष्टि में सबसे Then पहले he एक जगह created चतुसेन मन से Manas सृष्टि चलती है। universe uh, बेटा from ने कहा heart. पिताजी हमको क्या आदेश है? Yeah, बोलते तुम भी सृष्टि that करो, universe बोलते is नहीं, मैं working बताता हूँ इसको because कैसे of that चलता है। heart. हम And सहयोग से four समझाएंगे। child was born, भगवान जी को क्रोध आ गया Chatursan. And और उसके Chatursan मुंह से said that I will दुर्गंध not जलन going to निकला। do. Then Chatursan इसी asked प्रकार से भी Brahmaji, विश्वास what करो is तो seva for us? And then Brahmaji said तब that go ब्रह्मा जी and do के universe. शरीर से Then एक पुरुष Chatursan वाली said, शक्ति का no, we ज्वलन are हुआ। not going to do that, वो the पुरुष कौन? universe. बोलते We will स्वयं be, भगवान। we are sannyasis. और स्त्री कौन? उनकी Then पत्नी शत्रुपा। Brahmaji got ब्रह्मा angry, जी से and विवाद because हुआ। of that angerness, स्वयं मनु और two शत्रुपा। persons were born अरे out बोले of का Brahmaji. That पिताजी is one male and क्या another is सेवा है female. हमारी? बोलते तो And दोनों both मिलकर were सृष्टि करो। asked by Brahmaji, what is तब seva for us? स्वयं मनु Then और Swayambhu शत्रुपा Manu से and Shatrupa मैं फिर uh, सृष्टि करना चाहता started this हूँ। और इनके यहाँ तीन biological कन्या universe, और दो पुत्र। from which two उससे पहले put, मन से सृष्टि two होने sons की and वाणी three करता girls were born. तब इन दोनों से So मैं फिर before सृष्टि that, आरंभ की her Shrishti was और being तीन done, कन्या but आपको it तीन was not प्रसूति successful. एक Then होती from Shatrupa and और दो Manu, पुत्र हुए three daughters and राजा two sons were प्रेमरथ born. महाराज और उतानपाद। Two sons were इन Premraj तीन कन्याओं Maharaj को and Utanpad. स्वयं मनु ने इनका विवाह कर दिया। अकुति का विवाह रुचि नामक प्रजापति से किया। And three girls were born. प्रसूति One का was named विवाह Akruti, and Prak- दक्ष प्रजापति से किया Akruti was और married. देवहूति का विवाह कर्दम जी से किया। Devuti was married to Kardam Rishi. कहना तो आज कुछ और चाह रहा था, लेकिन अब प्रसंग ऐसा आ गया। खैर भी चलते आगे बढ़ते हैं। कर्दम जी So Kardam Rishi भारी तपस्या में बैठे रहते हैं। is doing heavy tapasya. स्वयं को मनु अपनी कन्या देवहूति इनका विवाह किसी सुंदर और बड़े धनवान व्यक्ति से करना चाहते हैं। इससे पूछा प्रभु किससे अपनी कन्या का विवाह करूं? So Swambhu Manu wants to get married his daughter Devhuti to a very rich person. So then he asked Prabhu to whom I should get married my daughter Devhuti. That then he asked, go and get married to her to Kardam Rishi. Then he said he don't even has his own home. What type of money and richness he has? So then Prabhu said that he has the money of tapasya. He has everything through tapasya. He has money of thousands and thousands of years of tapasya. भगवान भी आए और उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हुए। Kardam Rishi, when doing tapasya, Bhagwan came and so was so happy of that tapasya that Bhagwan started crying, and because of that crying, he a pond was made which was named Bindu Sarovar. And after that Hari went away and Kardam Rishi was married to Devhuti.
कि मैं तुम्हारे यहाँ पर पुत्र बनकर आऊंगा। So as a इसी born प्रलोभन से Kardam Rishi स्वयं got that मनु जब I will ब्रह्मा जी के come पास as a आए, son of yours. ध्यान से सुनना, So when यहां से ध्यान से सुनना। स्वयं मनु कौन है? when सारे पृथ्वी के राजा, uh, Swambhu एक Manu is घराने के राजा नहीं, uh, एक देश के नहीं, king of not only one पूरी पृथ्वी के village, राजा state or country, स्वयं मनु। but he is king of whole of this कितना universe. धन होगा, कितना वैभव है, Just think और how कन्या much कैसी, money he must be having. देवभूति जी And इतनी सुंदर थी, his इतनी सुंदर what थी, about इतनी his सुंदर daughter? थी। His daughter Devhuti was so बताया beautiful. गया एक बार अपने घर के छत पर It was गेंद से been खेल tell रही that थी once और upon time आकाश she से was कुछ playing गंधर्व जा रहे थे, with a ball और on ब्रह्मा ने her terrace, देवभूति जी को and देखा, some devtas were इतनी going बड़ी मास्टर थी, above the terrace, स्वर्ग में भी and when they सोती saw पड़ी हुई है। the Devhuti, they saw that they have never seen such a उसकी beautiful सुंदरता girl को ever. देखकर गंधर्व भी That they मूर्छित don't होकर गिर गए, even seen a beautiful girl in a मूर्छित होकर गिर heaven. गए। So after seeing the इतनी beauty सुंदरी of थी, Devhuti, they और fainted. पिता अपनी पुत्री को uh, लेकर गर्दन जी के this पास आए, type जो of beauty तपस्वी they हैं, Bhuti एक has, साधु हैं, and they और she तपस्या में was बैठे हैं। taken to a sadhu नदी Kadam का टाइम तो Rishi गर्दन जी by ने उनको his father. स्वागत इत्यादि किया। When स्वयं मनु जी ने प्रस्ताव दिया, she saw Swambhu मैं Manu, अपनी कन्या देवभूति Swambhu का Manu विवाह asked आपसे करना चाहता Kadam हूँ, Rishi that I मेरी want to पुत्री का get हाथ my प्रदान daughter कीजिए। married to you. I कर्दम जी want बड़े you to प्रसन्न take her हुए, hand. And वो Kardam अपने Rishi विवाह को became अपने so पत्र में happy आपको and लिखते हैं, said that लेकिन हमारी yes, I शर्त है। will get married to your daughter, but I क्या have शर्त है? one condition. शर्त ये है, What is that condition? जिस That दिन हमारा बालक होगा, the day हम we will सन्यास be ग्रहण having करेंगे। a son, I will go and take बस यही sannyas. शर्त है। बोले हाँ, Then यही शर्त Swambhu Manu said, only है। हाँ, this हम condition? राजी हैं। Okay, I am ready for that. कौन सा ऐसा पिता होगा जो अपनी कन्या का विवाह Just think एक ऐसे who ऋषि, will be एक that साधु से father, करेंगे जिसके पास अपना घर भी नहीं है। who will be that father who will करोगे get his daughter अपनी married कन्या का विवाह to ऐसे that किसी से? sadhu who don't even have a पहले जाकर house देखिए घर of कौन his बना है, own. काम क्या करता है, Firstly, we always पैसा see कितना what type कमाता of है। house the person we are getting स्वयं married to मनु जी की our शक्ति daughter देखिए, have and how much money कर्दम he जी की earns. तपस्या But को देखिए, Swambhu Manu is not watching all of things. He is watching और how much विवाह इतनी tapasya फुर्ती से कर रहे हैं जिसको that देख के Rishi गंधर्व has भी मूर्छित done. होकर गिर पड़े हैं। And which type of कहाँ daughter एक is ऋषि, getting कहाँ पर married? स्वर्ग, Though that daughter uh, और who is साथ so में शर्त भी beautiful सुन ली, that devtas got fainted because अपनी of her कन्या का विवाह beauty. करोगे उस लड़के से, उस And that व्यक्ति से जो ये कह रहे हैं कि देखो Kardam विवाह के Rishi बाद तुम्हारे संतान होगी तो मैं is सन्यास also लूंगा। putting a condition that if we will got a बोले son, भैया तो मैं I will विवाह be करूंगा, taking sannyas. रहने दो, Just think सन्यास about मत लो। what type of marriage this will be. स्वयं मनु जी ने तुरंत विवाह But करवा दिया, Swambhu Manu said देवभूति का yes विवाह to हो गया, this, हाथ उनके हाथ में प्रदान किया, yes to this, और वो and लेकर चले गए। they बोth will get married. देवभूति कर्दम जी का विवाह हो गया, Now Devhuti और ji विवाह and के बाद Kardam सब Rishi घूमने फिरने is चले गए। married. Now after marriage, कोई everyone स्विट्जरलैंड जाता है, goes कोई to इधर here जाता है, कोई and उधर there. मथुरा जाता है। Some goes to Shimla, some goes to कर्दम जी तो Switzerland. बस ऐसे ही एक दिन सुबह उठकर तपस्या में बैठ गए, जैसे But रोज Kardam का नियम Rishi was होता है। sitting in tapasya, just like तपस्या में every बैठ गए, morning he तो does. ऐसी समाधि लग गई। ये भी बड़ी बात है, तपस्या तो बहुत करते हैं, लेकिन समाधि किसकी लगती है? कर्दम जी ऐसी तपस्या में बैठे, समाधि लग गई, होश ही नहीं, और समाधि भी मिनटों की नहीं, So when घंटों Kardam की Rishi नहीं, was sitting and दिनों doing की नहीं, tapasya, he went सप्ताह to the की deep नहीं, महीनों concentration. की नहीं, He वर्षों was की so समाधि। absorbed in that it was वो not इसी के only साथ चले for गए, 1 or 2 days or एकदम 2 months उस or भवन में three लीन months. हो गए, It was for years, and he was so absorbed in the ऐसी mantra स्थिति में पत्नी क्या that करेगी? he सोचो was जरा, not aware what's going around him. रहेगी कि चली जाएगी? And just think what a बोले wife भैया will हम do in समाधि this में बैठे state हैं, आप when हैं his स्वामी, husband is doing तो मैं आपके meditation. पास रह के क्या करूं? What मैं she नहीं will do? अपने प्रिय होगा, She will think that she माता should पिता go की back आज्ञा to और मैं her घर में रहूं। home, to his father's देवभूति home. गई नहीं, But Devhuti ji didn't went back. She stayed there अभी अभी only. विवाह हुआ है,
uh, she has got married to him, and not even one day has passed, and his husband is under meditation, हजारों वर्षों की समाधि, and हजारों वर्षों that की समाधि, meditation continued for और thousands of years, देवभूति वहीं रही and she stayed there और only. वो भी तपस्या में बैठ गए, And she also starting खाना पीना doing छोड़ दिया और meditation. स्नान She करना left शुरू किया, doing having food or हजारों वर्ष taking की bath. तपस्या के She उपरांत also started doing meditation, एक and दिन after करदम जी जब thousands of अपने years देश of में चले, meditation, when Kartam Rishi सामने opens देवभूति his जी को देखा eyes, he saw Devhuti ji in और front of देखकर him, आश्चर्यचकित हो गए, अरे and देवभूति, he got started that, अरे हमारा oh तो विवाह Devhuti, हुआ, we got अरे married, तू तो and समाधि में बैठ गया, I went to the meditation, I हमारा तो forgot विवाह that we हुआ, got married. और देवभूति तुम कैसी हो गई, And Devhuti, इतने how you सुंदर have सुंदर become? तुम्हारे You केश थे, were so beautiful. इतनी You तुम were सुंदरी थी, having so वो beautiful केश कैसे hairs, जटाएं बन गई हैं, and your hair are रूखी have सूखी सी become हो गई so हो, hard, and अच्छा you देवभूति become so चिंता मत thin. करो, हम तुम्हारी सेवा करेंगे, Then Kardam उसी Rishi समय said, करदम जी ने "Oh देवभूति Devhuti, से कहा, don't feel ये sad. I कपिल will है, इस serve कुंड में you. स्नान करो, Go inside this डुबकी kund लगाओ, and take bath in this kund." अब पता लगेगा तपस्या का प्रभाव क्या होता है। देवभूति जी ने कुंड में स्नान Then किया, Devhuti ji took bath in that बाहर pond, निकली, and when she जैसे came out पहले of से that बिल्कुल pond, उससे she became और so अधिक so सुंदरी होकर beautiful. बाहर She निकली, became more beautiful जितनी पहले than से she नहीं was थी। before. उस कुंड में पता नहीं क्या ऐसा दिव्य शक्ति है Just think जो about करदम जी ने the कहा power और and सुंदरी fruit होकर of बाहर that निकली meditation, that और she साथ ही was साथ made बहुत more सारी beautiful दासियां than भी she was. And not उस कुंड only से बाहर निकली her, out of that और pond more देवभूति की सेवा कर रही थी, dasis श्रृंगार कर came रही out थी। of that pond, और and those देव dasis करदम जी कहते हैं, started देवभूति तुम्हें serving हमारे लिए इतना Devhuti. कष्ट सहन Then किया, Kardam Rishi said that you have faced so many problems because of अपने me. मन से एक यान बनाया, एक जहाज And then बनाया Kardam Rishi अपने मन made से, a कैसा जहाज vehicle, I जिसमें पेट्रोल की आवश्यकता भी a नहीं, vehicle for Devhuti. And which type of जिसमें vehicle पायलट की he भी जरूरत made, नहीं, that it don't जो even मंद गति से need चले, petrol or diesel to मंद run, गति से चलने and वाला, also don't need any driver. It runs और वो जहाज भी कैसा, on यान the कैसा, speed of उसके ऊपर mind. पर्वत, सरोवर, And that नदी, vehicle is बहुत not an ordinary vehicle. It और has so मंद many गति things. से It has सारे mountains, अंतरिक्ष में beach, हजारों वर्षों की waterfall, वो यात्रा everything. करता है, And that vehicle is ये है roaming करदम जी की here and तपस्या, there. So this is the fruit of बड़े बड़े Kardam ब्रह्मांड Rishi ये सब चाहते हैं, meditation. Uh, can और uh, देखने uh, में लगता है can a कि rich हो person सकती do नहीं, this thing? No, a rich person cannot देखने do में this लगता thing. है This can only be एक done दुनिया by दिखती a है, meditation. By लेकिन outside, अपने it can be seen that he कातर is से not even having a आकर्षण single room, single house, a shelter. और वही But कपिल because of that देवभूति meditation, जी को this can be done. कन्या प्राप्त हुई, And जब after कन्या that, प्राप्त Devhuti हुई ji तो got करदम जी ने pregnant, कहा and चलो she हम got चले her संन्यास लेने, daughter. हमने तो पहले ही कहा हमारी शर्त है, When the daughter was born, Kardam Rishi said, "I am देवभूति ने going कहा to आपने कहा था जब going for 12 लोग विवाह हो sannyas." जाएंगे इन कन्या का विवाह मैं Then अकेले कैसे करूंगा, Devhuti ji said that you said when son will be born, then you will तब be करदम going जी की to आज्ञा the हुई, village. Then Kardam Rishi भगवान का stayed. शब्द हमेशा होता है, Then after तो that, कपिल भगवान है, Kapil Bhagwan was बोलो श्री born कपिल out of भगवान Devhuti की ji. जय, बोलो कपिल भगवान की जय. करदम जी को चरण छूने लगे, प्रणाम करने लगे, बोलते प्रभु Then आप घर Kardam में आए, Rishi अब मैं क्या starting सन्यासी touching लूं, feet of Kapil Bhagwan, and said कपिल that भगवान now ने I am कहा going to the village and मैंने taking अपने तुझे sannyas. कौन बनाया, Then Kapil Bhagwan is saying, आप I सन्यास have लेकर came बाहर to क्यों your आ रहे हो, home as your son, and now सन्यासी you are क्यों taking लिया जाता है sannyas. और वन क्यों जाया जाता है, And why भगवान के लिए, we need to go to the कि village and मैंने take घर में आया sannyas हूँ, just to फिर वहां किस लिए जा रहे हो, get Bhagwan. बोलते प्रभु And क्या करूं, me, घर में कोई myself, भी as भाव कुछ नहीं Bhagwan है, has taken birth in ना your दास्य home, और ना and you are दासी, leaving the home. बोलते मैं समझा नहीं, करदम जी कह रहे हैं यदि मैं आपको पुत्र मानकर, यदि मैं आपको भगवान मानकर आपको प्रणाम करता हूँ तो पड़ोस वाले झांक झांक कर देखते हैं So कि ऐसा Kardam भाव है Rishi is कि मुझे saying, भी प्रणाम if I करना will चाहिए, stay here and तो pay दास्य भाव obeisance भी to कुछ नहीं you, हो पाता, uh,
then neighborhood will say that I am paying obeisance to my own son. Then through this, my dasya bhav is not been nourished. And on the other hand, I am not like Yashoda Maiya and Nand Baba, who can pull your ears and hit you with a stick. So because of that also, my Vatsalya bhav is also not nourished. So Khardam Rishi left the home and took sannyas, and Devhuti is taking care of Kapil Bhagwan. Kapil, she is saying obeisance to Kapil Bhagwan and saying that uh, by this sense gratification, I am tired now. Now I want a permanent solution. Then what Kapil Bhagwan is saying to Devhuti Mata, she told about Sankhya Yoga Shiksha. What is that Shiksha? अहम और मम, मैं और मेरा ही सारी असक्ति का कारण है. According to their shiksha, मैं me और and मेरा. myself, I and me and myself is only यदि कोई आपसे reason for पूछे every problem. तो आप क्या कहेंगे? ये मेरी आंख है, मेरे So कान when है, someone asks from मेरे us, what we आंखें will हैं, say, this is my मेरा eye, this is मस्तक my है, hand, this is my head, this is मेरे my चरण है, मेरी बाल है, feet, मेरी this is जीवा है, my मेरा hand, नाक this है, is my tongue, this is my nose, मेरा घर है, मेरा this is my समाज है, मेरा house, देश this है. is my country, this is सब my मेरा मेरा करते neighbors. हैं. कोई मैं कहता है? मैं No one आंख हूँ, says मैं घर हूँ, me, I, me, मैं समाज हूँ, नहीं, I am tongue. मेरा है. No one say I am सब कुछ this. मेरा तो फिर We मैं always कौन say हूँ? this is my. So who am I? मैं कौन हूँ? ये प्रश्न आप गली में किसी को राह चलते को रोक कर पूछो. If we are भाई going to साहब, ask this question from the एक person मिनट रुकना. going in the street हाँ and बोलो बहन, ask that person मैं कौन who हूँ? I am, that then वो कहेगा मुझे तो तुम पागल लग रही हो. then that person will say that you are mad. ये प्रश्न पूछ सकते हो कि तुम कौन हो. We can ask this question, लेकिन who किसी को are रोक कर you? पूछो कि मैं कौन हूँ, So ये this is प्रश्न the right पागलों जैसा question. लगता है. लेकिन यही प्रश्न अध्यात्म में सबसे But श्रेष्ठ प्रश्न माना जाता in है. this spiritual world, the अध्यात्म topmost का question is आरंभ who I यही से am. होता है. The मैं starting कौन point हूँ? of the spiritual knowledge and spiritual world is who am I. मैं कौन हूँ? सब कुछ तो मेरा है, वो तो मैं जानता हूँ. Everything is mine, but who am लेकिन I मैं is से the मेरा बनता है question. कि मेरे से मैं बनता है. Is I am made अरे from जब myself or मैं नहीं हूँ myself तो is मेरा made कुछ from भी I नहीं am? है. If I am is not there, then my this is mine लेकिन मैं cannot नहीं be हूँ तो done. मेरा कुछ भी नहीं है. So और मैं हूँ existence तो of मेरा I सब कुछ am है. is the तो main मैं क्या reason है? of ये existence of आत्मा. other things. Then who I am? Who एक am से I कभी is भगवान ने आरंभ किया. soul. From ये here, माता, Kapil Bhagwan ये started अहम giving और knowledge मम, to मैं और his मेरे की mata. आसक्ति को छोड़कर Then अध्यात्म leave में आगे बढ़ो. this attachment of me and myself. कैसे आगे बढ़े? Then she is asking, how should I go सबसे सरल forward? उपाय बताऊं? Then Kapil Bhagwan is saying, should I tell you the easiest way? इतना कठिन Then हमसे Mataji is saying, नहीं yes, please समझता tell है. the easiest way. I cannot बोलो तो understand वाक्य the का पाठक सुनो. difficult path. सतां प्रसंगम अमृत संविदो भवन्ति हित कर्म रसायन कथा तद्योष्ण अश्व प्रवर्तनी श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमशति. सतां प्रसंगम अमृत संविदो. माता, सबसे आसान काम है अध्यात्म का. Then Kapil Bhagwan is saying the easiest path to follow in this spiritual world is to go nearby the Guru Vaishnavas. बाकी का काम फिर वो करेंगे. And कितना तो करना all है. other बिना things will be भोजन done कभी by नहीं करना. Guru himself. You just have to बिना go भोजन करोगे तो nearby कोई the ना किसी feet का of पेट नहीं Gurudev. भरता. कितना तो काम करना पड़ेगा. Just like you have अरे to तब eat तक food ठीक है to जब तक एक remove दूध your माता से कहते हैं माँ उसको आज खीर खानी है. hungerness. If a और child बच्चे ने यदि ask इच्छा की तो माँ क्या नहीं his करेगी? mother that I want to बाजार eat से दूध sweet भी pudding, लाएगी, चीनी भी she will लाएगी, go to सब the लाएगी. market and buy सुंदर milk, ध्यान से खीर rice, बनाएगी. sweet sugar, तो माता everything, and पिता she will कहते make हैं a तुमने से sweet pudding for नहीं his मांगा. child. And मैं तो she will यहाँ खीर ask ही his लेके आ रहा हूँ. child मेरे to को खीर come यहाँ and पर take दो. this sweet pudding and eat.
Then child is saying, no, I am watching TV, you come and give me sweet pudding. Then mother will go and give sweet pudding नहीं to माँ his ये child. एक्चुअली देखो Now मेरे हाथ में फोन भी है child is saying that I am तो मेरे playing मुंह a में नहीं game, डालो you just make me तो eat माँ this तो day. मुंह में भी Then डालेगी ना mother will take the spoon and put करती sweet कि नहीं pudding करती in बोलो the सबसे mouth मानना है of तो the बच्चा तो child. कितना करेगा लो But now तो ले अच्छा uh, खा ले मुंह में डाल दी चल अब चबा but नहीं now माँ क्यों can the चबा रहे हो child, if asked that I will not chew that sweet pudding myself, you chew, माँ चबा can सकती it be है done? No. The child बस इतना तक himself बात has कर to सकती chew हो that sweet pudding. Up to खेल this बना mark सकती है only she परोस can सकती है दूर do तक बढ़ा that, सकती she है can put चबाना the किसको नहीं sweet pudding पड़ेगा into the लीला का mouth. उसको नहीं पड़ेगा Now the process has to be done by child. So इसलिए एक ही similarly, काम करना है only कपिल one भगवान thing कह रहे we बाबा have to do, we सदा ही have to प्रसन्न come nearby और Guru मेरे Vaishnavas. सब विघ्नों After that, Guru Vaishnav भगवान will जी do हर everything. रसायन मेरे साधुओं के पास चले जाओ मेरे संतों के पास जाओ फिर वहां क्या होगा वो मेरी कथा सुनाएंगे Then what Guru Vaishnav will do? बड़े They will अभिमान से कहते हैं वो tell मेरी you चर्चा my Hari करेंगे Katha. मेरी बात They कहेंगे will और मेरी जो teach बलवान you my all दंडवती जो leelas कथा है and वो everything. सुनाएंगे और वो कथा सुनकर क्या होगा And after listening बहुत to ही that अधिक बल Katha, रसायन what will happen? वो कानों के लिए और Your हृदय के ear लिए and your दोनों के लिए heart कैसी will होगी become रसायन will act as यही दो सबसे बड़ी Amrit. बीमारी कान और हृदय कान का रोग क्या कान में दर्द हो जाना वो रोग नहीं कान का रोग ये है जो दिन रात हम अनाप शनाप बातों को सुनते रहते हैं कान का रोग है और हृदय का रोग क्या है काम वासना ये हृदय का रोग है So, what is the disease of our heart? That is Kam Vasna. We kept on doing, get our sense gratification. We always kept on doing everything just to satisfy ourselves. And what is the disease of our ears? That we want to hear different gossips and everything. And what is the solution and medicine for both of this disease? That is Hari Katha only. भगवान की जो बाल लीलाएं श्री कृष्ण की ब्रज की बाल लीलाएं जो सुनता है उसका कान का रोग चला जाता है So the person who hears the Bal Leela, that childhood Leela of Bhagwan Krishna, his problem of ears, disease of ears will be solved. And what is the solution for calm of heart? श्रद्धानंद अनुशून्या तथा वर्ण्यहा भक्ति परम भक्ति प्रतिलभ्य कामः हृदय रोग अश्नोति अचरेण अन्यः रास लीला समाप्त करने के उपरांत सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं जो श्री कृष्ण और गोपियों की रास कथा को So after ending the Ras Leela chapter by Shukdev Goswami is saying that if someone listen to this Ras Leela Katha, then the disease of your heart will be solved. So these so solution for your heart and ear is Hari Katha only, and they both are connected with each other. What we listen comes to our heart only. So Kapil Bhagwan is saying that you just have to take this much thing in your life, that you have to go nearby Guru Vaishnav. Just like a patient go to the doctor, then doctor will do everything. You just have to go to the doctor. Similarly, Sadhu Guru Vaishnav is also a doctor. How he do operation surgery for us by giving us Hari Katha. In his words, he has even sweetness and also soreness. Some medicines are so so sore,
that we can't eat it directly. That's why it is sometimes sugar coated. Similarly, sadhu language is also sometimes sugar coated and sometimes feels like it is like sharp like उनकी sword. वाणी ना तलवार की तरह है, बड़ी कठोर, और जन्म जन्म के हृदय में जो And because गांठें of पड़ी that है ना, sharpness, ग्रंथियां हैं, it उसको छेदन tries करने वाली to remove all the dirt विद्वेषी from your heart. ग्रंथि छिदन्ति सर्व संशया, हृदय की ग्रंथि को वो छेदन और भेदन करने वाली उनकी वाणी, और ऊपर से लोग बड़ी मीठी मीठी बोलते हैं, From ऊपर से upper, क्या it बोलते हैं, can be आप seen तो that बड़े it is अच्छे very हैं, sugar coated, सत्संग सुनने आते but हैं, ये मीठी वाणी it होती acts है। as a कथा के बीच sword में क्या for बोलते थे, your heart. नाम नहीं करते, एकादशी नहीं करते, Just जीवन like भर when धिक्कार आता Gurudev है, is speaking Hari Katha, it's look very beautiful. लेकिन But बड़ी मीठी sometimes in वाणी से between करते he हैं। says you don't do Naam, you don't follow Ekachi Vrat. That is very bad. So these words will hit your heart directly and will remove all the dirt. So in this way, Kapil Bhagwan is giving shiksha to Devhuti Mata of Sankhya Yoga, and Devhuti Mata, Devhuti Mata became so happy. But in this universe, what is seen that Mata gives shikshah to his son, but here opposite is done. That son is giving shiksha to her, to his mother. So it can be said that in the spiritual world, there is no relation can be seen that mother is giving or son is giving, or nothing can be related to age. और बेटा पिता से बोलता है, पिताजी आप मुझको झूठ बोलना सिखा रहे हो, Once जब a कल मैं स्कूल father से आकर आपको asked झूठ बोला था कि मेरी टीचर ने मेरे को कुछ नहीं कहा था, Once a जबकि father उसने मेरे को asked मारा his था, child जब मैंने to वो झूठ बोला say, था तो आपने मेरे को go बहुत and सुनाई say थी, outside that I am तो not कल at आपने home. मेरे को क्या Then शिक्षा son दी थी, said to his बेटा father that जीवन you में are झूठ नहीं teaching me to बोलना, speak lie. सच बोला था, Yesterday when I और आप उसको क्या spoken सिखाते lie, हैं, then you बात chastised जो है me उसको बोल दो, that मैं it's घर very में bad नहीं and हूँ, never speak lie. But now you are asking me to speak lie. आप ऐसी शिक्षा दे रहे हो, What type of shiksha you are giving to me? ये सच शिक्षा है, This is not a good ये सच शिक्षा lesson है। you are teaching me. उस बेटे की बात सुनकर After listening to the पिता words भी of डर his गया, son, कहा father देखिए got बेटा उसको startled, बोल दो मैं and घर में हूँ, father then said, "Go and say to the person that I तू am at मेरा बेटा home. नहीं, You are not my तू मेरा son. गुरु नहीं You है, are just आज like मैंने my guru, मेरे को भी शिक्षा दी, who has given me इसलिए कभी lesson कभी today." हम छोटों से भी बहुत So शिक्षा लेते हैं, sometimes we can get lesson और from our भक्ति में younger तो ones बड़े also. छोटों को सिखाने And के in लिए bhakti there is no जिन relation वचनों of से younger or elder. भक्ति विचार The person who is कुछ हम doing उससे आगे bhakti is जाते not हैं, related to any जो age भजन factor. करता है वही श्रेष्ठ The है, person who is doing bhakti भगवान की is भक्ति में the बड़े छोटे topmost का कोई person, and विचार even नहीं if है, he is younger to the इसलिए कपिल person, भगवान अपनी he will बातों be से elder in भक्तों this को spiritual world. So साधु here संत की Devhuti शिक्षा Mata is प्रदान being करता given lesson by his son है। ये कौन से भगवान Kapil है? Bhagwan. कपिल भगवान, जो भगवान के शब्दा में शब्दा है। He was Shakta Veshavatar of Bhagwan Krishna. बोलो श्री कपिल भगवान की जय। कथा को थोड़ा सा विराम देते हैं, भजन सुनते हैं, और उसके बाद फिर अब दूसरी कथा को सुनेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं ना?
एक तरफ तो बड़ा सुंदर सिद्धांत और दूसरी तरफ बड़ी सुंदर सुंदर क्या कर रहे हैं, ब्रज की लीलाओं को श्रवण कर रहे हैं। और जो इतने दिनों का ये जो भागवत कथा रखा गया, जो इतना सब कुछ प्रयास किया जा रहा है, उसके पीछे का प्रयोजन क्या है? क्या कहा? भगवान का नाम करना। क्यों? वो नाम ही क्या है? कलयुग का सबसे बड़ा साधन है। तो क्या कहा? कलयुग केवल नाम अठारा, सुमर सुमर नर उतरे ही पारा। ये नाम ही है जो क्या करेगा, जब हमारी मृत्यु हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी, ये नाम ही क्या करेगा, हमारे साथ जाएगा। और अन्य कोई भी चीज हमारे साथ नहीं जाएगी। जैसे बड़ी सुंदर कथा आती है, क्या कहा कि एक राजा का जन्मदिन, तो उसने एक बड़ा सुंदर प्रस्ताव रखा कि आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं, तो क्या जो व्यक्ति जिस भी चीज को हाथ लगा देगा वो क्या हो जाएगी, उसकी हो जाएगी, उस वस्तु पर क्या हो जाएगा, उसका अधिकार हो जाएगा। अब सब बड़े प्यारे के साथ, अच्छा मैं इसको हाथ लगाऊंगा, मैं उसको हाथ लगाऊंगा, मैं इसको हाथ लगाऊंगा। लेकिन एक बड़ा छोटा बच्चा आया और वो क्या करता, सीधा आया और क्या करा, राजा के सर पर ही हाथ रख दिया। और क्या था, ये राजा क्या हो गया, अब मेरे हो गए। तो समझदार कौन था, बाकी लोग या फिर वो छोटा बच्चा जिसने राजा को ही हाथ लगा दिया, राजा को इतना बना लिया। इसी प्रकार से हम कितनी सारी छोटी चीजों पर ये मिल जाए वो मिल जाए, जो मिल ही जाएगा सब अपने पूर्ण कर्मों के अनुसार, किंतु जो सबसे बड़ी वस्तु जो भगवान का नाम है, उसे हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, उसकी तरफ अपना ध्यान नहीं देते। इसलिए क्या था, उस हरिनाम करने के विषय में, इसलिए जैसे भी आप जो परिचित ही हैं, ज्ञात ही आपको अभी हमारी वास्तु जी बतला रहे थे कि किस प्रकार से बड़े सारे भक्त हैं जो हरिनाम करने की इच्छुक है, किंतु कोई दिशा नहीं है। इससे जो कोई हरिनाम करने की इच्छा रखता है, वो क्या शनिवार के दिन, जब भी शनिवार आ रही है, उस दिन सामने ही जो होटल है, वहां पे रूम नंबर 306 306 में क्या कर सकते हैं, गुरुदेव से हरिनाम ले सकते हैं। हरिनाम लेने से लगता है हरिनाम माला, और कुछ माला में क्या लिखते प्रति, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो नाम, जो साक्षात है ठाकुर जी से अभिन्न है, ठाकुर जी और उनके नामों में कोई अंतर नहीं। इससे जो भी उस नामों को लेना चाहे वो हरि नाम को ले सकता है। लेकिन तो भी जैसे गुरुदेव बतला रहे थे, नो पेन नो गेन, कुछ लेने के लिए कुछ छोड़ना भी पड़ता है, कुछ नियमों का पालन भी करना पड़ता है। इसलिए उस हरि नाम लेने के लिए भी क्या था, 4 नियम। पहला नियम तो क्या कि मदिरा पान नहीं करना, किसी भी प्रकार का शराब नशा ये सब नहीं करना। फिर द्वितीय क्या कि पर स्त्री संग या पर पुरुष संग नहीं करना, और तीसरा क्या, जुआ नहीं खेलना, और चौथा क्या, किसी भी प्रकार का मांस मछली प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना। ये केवल 4 नियम है जो हमको क्या करना है, सर भगवान का नाम लेने के लिए पालन करना पड़ेगा। और जो भी सच में इच्छुक होगा वो क्या अपने आप से उन नियमों का पालन करेगा। क्योंकि जब हम भजन सुन रहे थे ना, जिसको शाम से प्रीत लग गई, फिर उसे बाकी दुनिया से कोई लेना देना नहीं, तो उसके लिए क्या हो जाती है, बड़ी छोटी वस्तु हो जाती है। बड़ी वस्तु के लिए छोटी वस्तु का त्याग करना कोई, उसमें कोई असुविधा वाली बात नहीं है। इससे जो कोई इच्छुक हो, मेरा कार्य तो आपको बतलाना, मैंने इसको बतला दिया। इससे जो इच्छुक हो वो हरिनाम ले सकते हैं। और एक और बात, जैसे जो गुरुदेव कथा कह रहे हैं, इतनी सुंदर सुंदर कथा, उन्होंने क्या, जो ये सारी कथा
वो क्या हमारे जो बाहर ग्रंथ लगे गए हैं उन सब में ये बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं क्या है, बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। गुरुदेव तो केवल 7 दिनों के लिए, किंतु उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उन ग्रंथों के माध्यम से उस कथा का क्या कर सकते हैं, संग कर सकते हैं, उसको अध्ययन करके उसको पढ़कर उन ग्रंथों के साथ क्या कर सकते हैं आप, ये जो सारी कथाएं हैं ये उनमें उपलब्ध है, इससे जो कोई इच्छुक हो वो ले सकता है। यही कहकर मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। देखिए एक बात बोलना चाहता हूँ, यहाँ पर भक्तों ने बोला कि हरिनाम कोई फोर्स नहीं कर रहा है आपको किसी चीज की, आपको लगा होगा कि हमें बार बार क्यों बोल रहे हैं नाम लेने के लिए। देखो साधु का एक स्वभाव होता है, साधु किसको कहा जाता है, साधु जो हमको भगवान का नाम समझ रहा है, जो हमको भगवान की कथा समझ रहा है, जो हमें भगवान से जोड़े, वो है प्रेम। महाराज जी का इतना शेड्यूल बिजी है मैं बता नहीं सकता। अभी जगत में हमारे थके हुए क्या फिर भी 3-3 घंटा हरि कथा आपको प्रवेश कर रहे हैं, 3-3 घंटा सुना रहे हैं, नाम करो कृष्ण से प्रेम करो, कृष्ण का नाम को जीवन का ही मूल्यवान है। क्यों? क्योंकि साधु का स्वभाव है पर दुखी, उनके हृदय में एक ही चीज आती है कि किसी न किसी एक प्रकार से इस जीव को मैं कैसे ठाकुर जी की सेवा में लाऊं। साधु का स्वभाव है, हमारे कल्याण के लिए साधु हमारे पास आते हैं। स्वयं ठाकुर जी नहीं आएंगे, ठाकुर जी अपने निजी जनों को भेजते हैं हमारे लिए, जब हमारे को मंगल हमारे को कृपाओं के श्री ठाकुर जी की जब उनकी दृष्टि हम पे पड़ती है तो श्री ठाकुर जी अपने निजी जनों को हमारे लिए भेजते हैं, हमें जगा दी बार चाहो जी। आज समय नहीं है और समय नहीं है भाई, यदि कहेंगे बहुत समय पड़ा है फिर आप भजन करेंगे, अरे बुढ़ापा किसने दिखा भैया, बूढ़ा है कौन, हम सभी बुढ़े, जवान ही बुढ़ा, बच्चे भी बुढ़ा है, जो मृत्यु के निकट वो बुढ़ा, शास्त्रों में बताया। इसलिए एक छोटी सी बात बोलूंगा, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या बताइए, आश्चर्य क्या है संसार का सबसे बड़ा? शास्त्रों में सुनने में आता है कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य बोलते हैं मृत्यु, कि मृत्यु भाई कड़वा सच है कि आनी ही आनी, फिर भी हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते कि दूसरा जाता है कि हाँ वो उसका क्या है, हम समझ जाएंगे। पर साधु क्या बोल रहे हैं, ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं, जो भगवान का सिंह करते हैं कि इससे बड़ा एक आश्चर्य है, जानेंगे क्या आश्चर्य है कि सुलभम भगवान नाम जीवा समझनी, कितना सुलभ है भगवान का नाम सुना इस जीवन, इतना सुलभ कर दिया। तथापि नरकम यान्ति किम आश्चर्यम्, फिर भी हमें क्या करना पड़ा, नरक जाना पड़ा। इतना सुलभ कर दिया भगवान का नाम इस जीवन से करने के लिए, फिर भी हमें नरक जाना पड़ा। ये संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। इसलिए भैया समझ नहीं, नाम लो और भजन करो, ठीक है। हरे कृष्ण श्री राधे गोविंदा ओ मन भजले हरि का प्यारा हो गोपाल हरि का प्यारा वही क्या नाम है, नंदा हरि का प्यारा। तो सभी करेंगे तो हाथ चलने के साथ, भाव के साथ, ओ जय गोविंदा जय गोपाल, गोविंदा जय गोपाल, जय गोविंदा जय गोपाल, जय गोविंदा जय गोपाल, जय गोविंदा जय गोपाल, जय गोविंदा जय गोपाल। होली गुरु हरे कृष्णा, होली गुरु हरे कृष्णा, होली राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा श्री राधे गोविंदा। गोपाल
भगवान के जैसी ही भगवान की तदीय वस्तु है। तदीय वस्तु का मतलब होता है भगवान के साथ जिसका तदात्म्य प्राप्त है। जैसे भगवान के चरणों में पड़ी हुई तुलसी, just like Bhagwan, things related to Bhagwan is also just like Bhagwan only. For example, Tulsi being used for Bhagwan ji is equal to Bhagwan. And the flower that is grown in the garden looks very beautiful, and if it is trodden by our feet, it will make no difference. But if that flower is being given in the feet of Bhagwan Krishna, and if that flower is being trodden by our feet, then it will make a difference. Just like Bhagwan is worshipable, the things related to Bhagwan are also worshipable. सारे स्कंदों को प्रणाम करते हैं। तृतीय स्कंद, चतुर्थ स्कंद, पंचम स्कंद, षष्ठम स्कंद, सप्तम स्कंद, सबको हाथ जोड़ के प्रणाम किया। नवम स्कंद तक पहुंच जाते हैं। जहां पर दुर्वासा जी, so now we are talking about ninth skand, in which Durvasa Rishi is taking the mala of Bhagwan Krishna to Indra. Indra being the Satogun top in nature of that Satogun, he is in his own nature, and he was sitting on his elephant Iravat. कि स्वर्ग की स्थिति क्या है और कौन स्वर्ग पहुंचता है और फिर वहां से कैसे फेंक दिया जाता है। तो उतना तो समय नहीं है सब समझाने का।
we know what happens in heaven and how one reach to the heaven. If we do so many good deeds, and in return of that good deeds we reach to the heaven, and when that good deeds end, we are thrown out of that तो heaven. वहां के लोग पूछते हैं So this is been अपने मन asked से जाओगे कि धक्का मार के निकालोगे? by the people of the heaven, that you will go yourself, or should we किसी एक kick you होटल out में of this जाओ, heaven? If we go to the hotel 50,000 हम and नहीं है, give we have 50,000 in our pocket, जितने दिन तक वो 50,000 and the में day आप देते रहोगे we तब तक will be तुम्हारे keep आदत से giving रखोगे। money out of those 50,000, और जब the people of that पैसा hotel खत्म हो will जाएगा, keep you very happily, and the day the उसके 50,000 will बाद end. कहोगे देखो भाई हमारा तो After बहुत that, if we will मन है, ask अब the तो यहाँ person, रहने को I बहुत want मन to कर stay रहा है, here for more time, I want to 10-15 be दिन here और and रहेंगे, हम तो enjoy this रहेंगे नहीं place, बिना पैसे के। will they allow you to ज्यादा से stay ज्यादा for 10 1 to दिन, 15 days? No, maximum to maximum 1 day और they will allow रोज you. जब नई नई घर And मिले तो if समझ लेना you कि will ये not लोग going to हैं, leave that place, लोग से पैसे। just think what the आज हम security कहेंगे नहीं भैया people of the hotel आप जाएंगे या हम कुछ do with करेंगे, you. They will firstly ask you धक्का humbly मार के to जबरदस्ती leave भेज के that place, जाते and हो, if you don't leave that place humbly, then you will be thrown घर से forcefully. काम करो, Similarly, you are thrown फिर out of the इससे भी heaven कम पुण्य कमाओ forcefully. फिर आ जाओ। Go and earn more good deeds, then come back. इसलिए देवता Similarly, सत्वगुण प्रधान devta होते are हैं, निर्गुण sattva नहीं gun होते। pradhan, and they are not nirgun. सत्व रज और तम There are तीन three गुणों का guns: satogun, rajogun, and समावेश tamogun. है, There are these और three जो guns, तीन गुणों से ऊपर उठ जाए and वो the है श्री person who हरि, is श्री above these भगवान। three guns is Bhagwan Hari. इंद्र को दुर्वासा जी ने इंद्र को प्रसादी माला दी, Durvasha ji is giving और इंद्र a ने mala of को Bhagwan to सम्मान Indra, करके भगवान and ने Indra हाथ is के सिर not पर रख दिया और paying हाथ में से obeisance सिर to घुमाया और that mala, नीचे गिर and के he पैरों has से thrown भस्म that हुआ। he has put अब that बराबर mala धरती on पे देखा, Iravat अब पहले उसके elephant, स्वामी का हुआ, and elephant when moved his head, हाथी ऊपर that चढ़ गया mala तो क्या पता, fall down, and he walked on that mala, लेकिन and उसका this जो स्वामी was है उसका प्राण हुआ, disrespect भगवान to की प्रसादी Bhagwan माला का क्या हाल है directly. उसका। So the दुर्वासा जी ने श्राप दे disrespect दिया, was not done by the इंद्र elephant, but it was by the मैं तुमको श्राप देता हूँ, Indra. And Durvasha सारी Rishi, after showing संपत्ति this, से gave हीन हो जाओ। ban अब to ये श्राप की बात पता लग गई असुरों को, Indra, that you वो तो will सब समय be अवसर not ढूंढते having हैं, all this पता लग property जाए and वो स्वर्ग पर everything आक्रमण of करके स्वर्ग heaven. का राज्य So लेते this was जाए। known by the devils when they असुरों ने got to जाकर know स्वर्ग पर about this आक्रमण किया ban. और सारे देवता तितर बितर होकर भाग गए। And did they attacked devtas, and अब सारे devtas are देवता running जाकर here भगवान से and कहने there, लगे and कुछ करो, devtas came near Brahmaji, भगवान that से कुछ save us, करो, please ask तो Bhagwan सारे मिलकर to save भगवान से us. निकट That आए, all went near to the प्रभु Bhagwan, स्वर्ग please का राज्य save us कैसा है, from those आप devils, कुछ सहायता कर and दो। heaven is being taken by भगवान ने them, कहा देखो मैं please कबूल करता हूँ नहीं करता। help us. Then गीता जी Bhagwan ने is कह saying, दिया I don't समम सर्वभूतेषु ना में द्वेष्टि अस्ति ना में प्रियः, मैं सबके लिए एक समान हूँ, किसी का मित्र नहीं और किसी का वैरी नहीं, परंतु So Bhagwan is जे say, I मदन don't माम do भक्तया, discrimination in जो मेरा भक्ति anyone, करता है उसके but the प्रति मेरा person who झुकाव do जरूर है। bhakti of me, I am देवताओं inclined तुमने towards अपराध किया that तो तुम person भोगो, a bit. So the लेकिन जो मनुष्य तुम्हारे aparad ऊपर है तो मैं कर सकता हूँ, disrespect was done by करना you स्वयं devta, पड़ेगा। so you have to face all these तो सुनो, consequences. तुमको एक So मौका देता but हूँ, yes, I can help एक you a उपाय bit. बताता हूँ, I give you तुम्हारी शक्ति और uh, असुरों की शक्ति मिल जाए, समुद्र में जाओ, मंदराचल I पर्वत give को you फेंको और a मंथन solution करो, for this. If you and devils, समुद्र का devtas मंथन and करके devils will अमृत come निकलेगा, together, and अमृत your पी लो, both power will be बलशाली हो used जाओ और अपने मन together, पर you स्वर्ग can राज्य ले लो। do a churning of samudra उपाय ocean, बताया and भगवान ने, after that things will be coming out, and लेकिन you देवताओं का पक्ष नहीं ले रहे, बोलते अपने पद पर अमृत पी लो and और अमृत पीकर out of अपने those बल things पर one will be युद्ध करके amrit, अपना राज्य वापस ले लो। and हाँ after मैं that you सहायता can जरूर कर सकता हूँ, win things, लेकिन करना स्वयं पड़ेगा, but you have बैठे to do बैठे it क्या होगा। yourself. I will not be doing it directly. परंतु हे भगवान ये मंथन कैसे होगा, And devtas are बोलते saying मंदराचल पर्वत how को ले आओ, manthan will be done.
how this churning process will be done. Then Krishna Bhagwan is saying, bring Madrachal mountain and use Vasuki snake as rope. उसको रस्सी बनाओ और मंथन करो। बड़ी विस्तार कथा है, समय के अनुसार नहीं। ये एक आधार बन रहा है कल की लीला का, क्योंकि कल कृष्ण जन्म उत्सव को मनाएंगे। आप कहेंगे कृष्ण जन्म तो चौथे दिन होता है, ये कोई रीति बन गई है क्या कि चौथे दिन ही कृष्ण जन्म होगा? ये कहां से रिवाज बन गया? ये तो कोई रिवाज नहीं है, ये तो कोई रीति नहीं है। भागवत जी में तो कहीं नहीं लिखा, मैं तो किसी श्लोक में नहीं देखा भाई कि चौथे दिन में ही कृष्ण जन्म हुआ, ऐसा तो नहीं है। कर लेते हैं, अलग बात है। पहले दिन भी कृष्ण जन्म हो सकता है और पहले दिन ही कृष्ण जन्म। Gurudev is saying, by this katha we are creating the base for tomorrow's Hari Katha, in which Krishna Bhagwan will be taking birth. और वो सत्यम परम धीमहि है कौन? वो परम सत्य तो कृष्ण है। आज माया पंडित जी वो बड़ा सुंदर श्लोक सुना रहे थे। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सतस्त योनिम नेत्रम सत्यम सतस्य सत्यम हृदि नेत्र सत्यम सत्य आत्मतम शरणम प्रभु। देवकी जी के गर्भ की सारे देवता मिलकर स्तुति कर रहे हैं और भगवान को सत्य सत्य कह रहे हैं। When Krishna Bhagwan was in the stomach of Devki ji, then womb of Devki ji, Devtas are doing prayer of Devti womb by saying Satyam Satyam, that this truth, every truth is Bhagwan Krishna only. So now we are listening to this katha in which Madrachal Parvat मेरे को उनको इनसे लगता है बहुत डर है ना। सरपंच जी सामने आते हैं तो मैं वैसे हिल जाता हूँ। आदत है ना, सम्मान है इसकी, बड़े हैं इसलिए। खैर सारे देवता ने जाकर असुरों से कहा, so all the devtas went to the devils and let's come together and we should do the churning of this ocean. Then devil said, no, we don't want to be with you. You are very discriminative. You are a great liars. Then the Devta said, no, we are brothers. How? Because they have one father. Kashyap ji was father, and Kashyap ji and Diti give birth to all devils, and Kashyap ji and Diti gave birth to Devtas. So they are brothers. So now, brothers, let's come together and we should do this churning of this ocean. So now devils said that how we will do churning. Then Devta said we have designed it already, that now we have to take this Madrachal mountain and we have to throw it in ocean. So now all went to the Madrachal mountain and they were trying to pick that up, but they were not even able to move that. So how many devtas were there? 33,000 devtas were there still, and just think about how many devils must be there, but they both were not able to move a mountain a bit. So now devtas were praying about Bhagwan. And now Bhagwan is saying, you keep on flaunting your power and you are not even able to move this mountain. Now the Bhagwan Ajit came there, and Ajit Bhagwan took that power and put it on the back of, on the head of Garud ji.
and Garudji is considering that mountain just like a sesame seed. And so the mountain which all the devtas and devils were not able to move was just like a sesame seed for Garudji. This shows that how powerful Garudji is. So now Vasuki Nag was being called to act as a rope. So Vasuki Nag also came. Devta hold the mouth of the Vasuki Nag and backside of the snake was held by Asurs. अच्छा वाला जो भाग है मुंह वाला वो स्वयं पकड़ लिया और पूछ जो गंदा गंदा So now devils are saying that you have given us the back point and the good point was kept by you. See, from the very first time you are doing discrimination. No, we are not going to do churning process. So now Devta said, don't fight. You can take the mouth and we can take the back tail of the snake. तो सारे असुर आकर नाग का मुंह So पकड़ all लिया the devils came in the front of the mouth and Devtas went to the tail side. पर्वत के नीचे कोई आधार So नहीं है there is a need of base or foundation below the mountain so that the mountain can move. वो पर्वत तो समुद्र के अंदर धंसता चला जा रहा So the mountain is getting inside and inside the ocean. So there is a need of the base. So now all devtas are thinking to the Bhagwan that now what we should do. So on each and every step Bhagwan is needed, and but they show themselves so powerful that they are if they are not going to be there in the universe, this universe is not going to work. But they are not even to able to do this even small things. तेरे अभिमान को मैं चूर-चूर कर दूंगा तू वर्षा करने वाला है Indra thinks that he do the raining process of in this world, and Krishna Bhagwan destroyed his attitude about this. पहले श्री अजीत भगवान आए So firstly Ajit Bhagwan came. और अब भगवान ने कौन Now Bhagwan Krishna is taking second avatar, that is Kashyap avatar. बोलो श्री Kashyap Bhagwan. एक कछुआ Kashyap Bhagwan became the base under the mountain Madranchal Parvat, and now the process of churning started, and Bhagwan Kashyap is enjoying this process. He is just thinking that someone is rubbing their back and he is enjoying it. मंथन हो रहा है So the churning is going on. होता है तो सबसे पहले नेगेटिविटी If something is churned in this world, firstly the negative things comes out. Not directly the fruits come. Similarly, the similar things takes place in bhakti process also. कम से कम इसको 4-5 घंटा चाहिए इस लीला को समझाने के लिए एक एक बात पर एक एक विचार पे और ये समझ लो 4-5 घंटे की कथा मैं 15 मिनट में सुना रहा हूँ कैसे सुनाऊंगा मेरे को नहीं पता So this katha is very long, which can be explained in 4 to 5 hours, but now he is explaining in 10 to 15 minutes only. So in the bhakti process also, if one don't start doing mala and listening to Hari Katha, till that point he never get any much problems in his life. But once you start doing mala, ekadashi vrat, listening to Hari Katha in a good manner, following the literal process which we have to, leaving the onion, garlic, not drinking alcohol and cigarette, then only you are able to do Harinam in real manner. So just like if you are taking the medicine and also drinking the cold water, your throat will not going to get okay. You have to follow all the precautions also. Similarly, in Harinam also, if you are drinking and smoking, then
the effectiveness of Harinam will never come. So to have the effectiveness, you have to take all these precautions. So similarly, when you start doing Harinam, some problems started coming in your heart. For example, you have taken a new home and which was being closed for so many years, and the dust is being sit in that house. If you are going to open the house and see where is drying room, kitchen, room, that dust in that house will not going to disturb you. But will you be able to live in that home with that dust? No, you have to clean. And when you will start cleaning with the broom, that dust will rise, and it will go inside your mouth, eyes, ears, and you will cough, and you will not be able to see. So the point, till the point you are not brooming, it was not disturbing you, but the point you have broomed the dust, it started disturbing you. Still you are cleaning that home because it is the only solution, because that when the place will be clean, only then you will be able to live in that place. So that removing of the dust is giving you problem, but still you are removing that problem. Similarly, we have so many uh, old problems in our heart, and the day we started doing Harinam, it will it rises. नहीं तो वो थोड़ा तुलसी बिल्कुल बैठा हुआ है, वो जहर है उसके अंदर, जब तक डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करेगा वो जहर अंदर फैलता जाएगा, और जैसे ही उसने चीरा लगाया थोड़ा सा तो चिल्लाना पड़ेगा, और उसके बाद फिर गया. And when in starting those problem will disturb you, but later it will give you the real happiness. इसलिए इसको कहा गया मंथन. That's why it is known as this process is known as churning. In starting, you will get a negative thing. This churning leela is related to sadhak process also. This is how the sadhan process take place. So when the churning started, the negative thing came out is wish, that is poison. And the Devta thought, who is going to take this poison? So now Devta said, we are not going to this poison. And devils also said, we are also not going to take this. Now they went to the Bhagwan, who will take this poison? Then Krishna Bhagwan said, think about yourself. Go to the Shivji and he will drink. Mahadev will only drink this poison. Devtas are asking, can't you destroy the effectiveness of this poison? Then he says, yes, I can. Still, I want Shivji, who keeps on taking my name on Rudraksh Mala. I want his name to be glorified in this world. My name is already glorified in different names like Damodar, Gokul, Nanand, Madhusudan, Ranchor. There are so many names, but I want my Bhakt Shivji should also be glorified. Just like Shivji has some names like Ashutosh, Gopeshwar, Mahadev, Bhuvaneshwar, Chakleshwar, Kameshwar, Yameshwar. There are so many names of Shivji. So all devtas started praying to the Shivji, just take this poison with you. Only you can drink this. Then Shivji took that poison and he didn't take to that poison to his heart. He just hold it till his throat, because in his heart he has given a place to Bhagwan Krishna and don't want that poison to go there. That's why he took hold in his throat only, and that's why he was that his throat become blue because of the poison effect, and his name came as Neelkant. In Hindi means blue. Kant means throat, blue throat. After that, a horse came
and Indra want that horse, but Asur had devil's head took that horse. कौन? बलि राजा। Bali Raja took that horse. और इंद्र तो हा हा करते रह गया, आज मेरे हाथ से घोड़ा Indra चला गया। was feeling very sad that why he was not able to get that beautiful horse. Similarly, we people in this material world keeps on feeling sad for useless things that I'm not able to get this, that, or other things. मंथन हुआ, Then after the churning, Surbhi cow comes out. Rishis took that Surbhi cow, and they are thinking that the milk out of this cow they will use for Krishna Seva. And after that, इंद्र ने कहा इससे पहले कोई और पढ़ ले। elephant came, and Indra took that इंद्र ने elephant. हाथी पकड़ लिया That was और Iravat भगवान Hathi. नेत्र नेत्रों में देखकर ही इशारा कर रहे हैं, देखा पहले लालच करता तो घोड़े में रह जाता, अब तो हाथी मिल गया। इंद्र भी बड़ा प्रसन्न, हाँ हाँ प्रभु आपने ठीक ही कहा, पहले लालच करता तो घोड़ा मिलता, तो हाथी मिल गया। घोड़े पे हाथी पे सवार हो इंद्र। Indra is sitting on the elephant. और भी भगवान को प्रणाम कर रहा है। चल तेरा जीवन भी धन्य है, अगले जन्म में तू आईफोन बन जाएगा। वो भी 16 प्रो। तूने भी एक बार अज्ञान सुकृति मेरी भगवान को प्रणाम कर दिया। मंथन हुआ, और इस बार मंथन से लक्ष्मी जी निकली। ये है चंचला लक्ष्मी। Then after the churning, Lakshmi ji came, and this Lakshmi is known as Chanchala Lakshmi. There are two types of Lakshmi, that is Chanchala Lakshmi and Mahalakshmi. The Lakshmi we keeps on calling in our house is Chanchala Lakshmi, but is the vehicle of the Lakshmi ji, that is Ullu, that is owl. लक्ष्मी जी का नाम है उल्लू, और ये है चंचल लक्ष्मी। Chanchal Lakshmi comes on owl. We all keeps on calling this Chanchala Lakshmi, that is और money. ये घर पर आती है, And when she comes, she lives in the house for some time, and she leaves the house and make you fool, and goes to the another house. Then there is another Lakshmi, that is Mahalakshmi, who always lives with Narayan Bhagwan, and her vehicle is Garud ji. श्री लक्ष्मी नारायण भगवान She Lakshmi Narayan always comes on Garud ji, गरुड़ जी पर बैठते हैं, और ये स्थायी लक्ष्मी है। and she is the stable Lakshmi. अच्छा, बात उठ ही गई तो फिर बोल ही देता हूँ, फिर लज्जा किस बात की, बराड़ा अपना ही है ना, तो अपना ही स्थान है, बाहर के होता तो संकोच होता है। अब ये भी दिवाली गई कुछ महीने पहले, So few months back Diwali went. आप लोगों से पूछूंगा, मैं नहीं बोलूंगा। So why we celebrate Diwali? पंडित जी आप नहीं बोल, दिवाली क्यों मनाई जाती है? So why Diwali is celebrated? उस दिन क्या होता है? What happened on that day? अरे जोर से बोलो थोड़ा। सब डर रहे, पता नहीं क्या हो जाए, कोई बिजली ना गिरेगी, चिंता ना करो। अच्छा, आप लोगों की बात मैंने सुन ली, अगर मैं कहूँगा तो कह देना यही बात सही है। राम जी लौट कर आए अयोध्या। What happens on Diwali? That Ramji came back to Ayodhya after 14 years. अपने लिए ताली बजाओ सब। दिवाली के दिन राम जी लौट कर आए, इससे दिवाली मनाई जाती है। So this is the reason why Diwali is celebrated. So in which home on Diwali Sita Ramji is being worshipped? झूठ बोलोगे ना भगवान के सामने तो इनको भेदू का तुम्हारे घर आए।
करो हाथ नीचे। दिवाली के दिन पूजन करते हो लक्ष्मी गणेश जी का। But on Diwali, you don't worship Ram and Sita ji. You worship Lakshmi Ganesh ji. दिवाली का दिन सीता राम जी का दिन है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो बात को। त्योहार उत्सव है राम जी को लेकर, लेकिन राम जी का पूजन कोई नहीं करता अपने से। That festival is of Ram ji, but no one worship Ram ji. Everyone worship Ganesh ji and Lakshmi ji. Did Lakshmi Ganesh came to Ayodhya on that day? So where is Ram ji? For whom this festival should be celebrated? No one worship that god. They all worship Lakshmi Ganesh. Why? Because they want Lakshmi. What means Lakshmi? Lakshmi related to notes, and that is money. They want that money should come to their house. And why they worship Ganesh ji? So that all their vigna, that is problems of their life, goes away. So only two things they want in their life is they have money and don't have any problem. And next day what they do, they just do the they left the deities into the water. आप अपने घर में क्या पंडित जी वाले बैठे हैं ब्राह्मण सब, आप एक दिन इनको घर में बुलाओ, बड़ा आदर किया, माला दी, चंदन दिया। If we call any Pandit or Gurudev in our house, on that day you served him very well. Give them flowers, mala, and food and everything. And on the next very day, you don't even meet them and see into their eyes directly. Will it look good? No, it will be very disrespectful. क्या भागवत जी में, रामायण जी में, वेद में, पुराण में एक ही So, is there any place where Bhagavad ji or in Vedas or anything where it is mentioned that you should worship Lakshmi Ganesh on Diwali? There is no proof of this thing that you should worship Lakshmi Ganesh on Diwali. क्या तुक बनती है? कि कहां से तुक बनती है? लक्ष्मी, अच्छा पूजन किसका होता है? शक्ति, शक्तिमान का। So who are being worshipped together? Shakti and Shaktiman. Just like Ram ji, Sita ji, Krishna, Radha, Vishnu, Lakshmi. So how Lakshmi ji and Ganesh ji are being put together? So this is some false thing started in the world, and everyone started following it. So we should worship Ram and Sita ji. Recently Ram Mandir is being inaugurated in the India, Ayodhya, and everyone celebrated it in the world, not only in India. For the 3 very days, the celebration was being done. Even in Canada, America, Australia, every place where this celebration was being done, and it was looking like Diwali is on that day. But on the day of Diwali, the Ram Naam is not taken. He is not against any puja, but the person who should be worshipped on that day, he is asking for that thing. So the festival is about Ramji and Sita ji, but no one worship them. क्योंकि हिसाब ही ठीक नहीं है, सब गड़बड़ चल रही है। समय नहीं है, नहीं तो मैं और अच्छे से पकड़ कर सकता हूँ। अरे शास्त्र की तो कोई चीज है कि नहीं? सिद्धांत, विचार, तत्व भी कोई चीज है, मन से हम कुछ भी कर लेंगे, मन से तो नहीं होगा। इसलिए चंचला लक्ष्मी
So the Chanchala nursing came out of the churning process, and she is having a varmala garland in her hand to put in someone's head. So she is thinking to whom she should select. Firstly, she shows Gurudev, Brahaspati, and etc. लेकिन इनमें एक दोष देख रही है। दोष क्या? ये पक्षपात करते हैं। वो देवताओं का पक्ष लेते हैं, वो असुरों का पक्ष लेते हैं। ऐसे व्यक्ति से क्या ब्याह करना जो पक्षपात करे? लक्ष्मी जी छम छम करती आगे बढ़ी। So she left the Gurudevs and went ahead. Then she saw Indra, and she thought that Indra has long age, but she is not very strong enough. He is very fearful. Just like when the even 100 Ashwamekh Yag is completed, he get to under fear that now his seat will also go. After that, she saw a moon. Then she said the moon is very beautiful and it is shining, but it is very lustful. He already has 27 wives, still he wants to have more wives. So Chanchala Lakshmi is watching bad things in everyone. Now she saw Shivji, and she said this Shivji is Sarv Gun Sampann. But she is saying that he is not looking good enough. Otherwise, he is having everything. I am so beautiful, and he is not much beautiful, handsome. So after that, she saw Vishnu Bhagwan. Then she said that Vishnu Bhagwan has all good things and also good looking, but he has one bad thing that he don't like me. He only do Atmaram, that is, he keeps on doing meditation in itself. He is complete in itself. Then Saraswati ji uh, came to Lakshmi ji, said that no, he loves you and he is the appropriate husband for you. Then Lakshmi Bhagwan put garland in the neck of the Vishnu Bhagwan. After the churning process continued, then Dhanvantri Bhagwan come. Dhanvantri Bhagwan is having Amrit in his hand. Now Devta and Asurs saw that Amrit is there. So there is one more avatar, that is Dhanvantri of Bhagwan. So there are line of avatar: Jeet Bhagwan, Kashyap Bhagwan, Dhanvantri Bhagwan. So Dhanvantri Bhagwan, from the hands of the Dhanvantri Bhagwan, Asur took that pot and said that they are going to drink it for the first time. So now Bhagwan took the avatar of a girl, that is Mohini. So 4 avatar took place in this Samudra Leela, Samudra Churning Leela, Ocean Churning Leela. And Mohini Bhagwan was so beautiful, is attracting to everyone. Then she went near the Asurs and said that you go away, you are not even watching me, you only want Amrit, I am leaving you. Then all the Asurs got so much attracted to the Mohini that even the heaven girls are not so beautiful. When the Mohini said, I am going to my home, then all Asur said, no, Mohini, you can take this pot of Amrit and you can give Amrit yourself, and we want you. Then now Mohini Bhagwan is having Amrit in her hand. And this is what Bhagwan wanted, that he will give Amrit herself.
प्रेम की बात है। मैं किसी को जबरदस्ती नहीं So कहता कि भगवान he is Bhagwan. He can snatch the Amrit, but why he didn't? Then the Krishna Bhagwan is saying this snatching thing is not mine. It is the thing of love. I will never force anyone to do the name of mine, do Hari Naam of mine. It is their own personal choice that they can do Hari Naam out of love. So when the love comes in your heart, only then you can do Hari Naam. So similarly, Mohini Bhagwan is having the pot of Amrit, and now Mohini is saying to Asurs that who are these beautiful men with you. देखा कैसे मोनी भगवान अपनी चाल चल रही है। असुर कहने लगे मोनी ये हमारे भाई हैं। Then Asurs are saying that they are our brother Devtas. मोनी ने कहा ये अमृत जैसी चीज Then तुम पिएंगे then अपने Mohini भाइयों is को पीने saying, क्यों मना रखा है? इनको why जला दीजिए। you have kept your brothers near us? This Amrit should be drunk by only you and me. Just separate these devtas from you. So now devtas and asurs are being separated in two lines. This is what Bhagwan wanted, that devtas and asurs should sit separately. So now, what Mohini is saying, देखो समाज में एक बात कही जाती है, that one thing is being said in this world. अगर कोई अच्छे से खा पी रहा हो, If someone is eating happily, and if someone is watching that person, then the food eaten by that person will not आपके सामने 10 गुलाब जामुन और will सामने not एक जैसे कोई give बीमार benefit है, to your body. उसके सामने आप बड़े मजे से खा रहे हो। For example, someone is eating gulab jamun in front of you, and other person is watching you with greedy nature. Then that gulab jamun eaten by you will not give any taste and benefit. Similarly, these devtas are watching you that you are going to drink this amrit, and if you will drink amrit in front of them, you will not get the benefit of amrit. So Asurs said that so you are so good nature that you are taking care of us like this. So now what we need to do? Then now Mohini said there is only one solution, that I have this Amrit pot. Uh, uh, the bubbles on this Amrit, we should give this bubbles to your brother Devtas, and the main shake down in the pot will be given to you. Then Sur said, yes, yes, you are right. Then Mohini is started giving Amrit to Devtas, and Asurs are watching that she will come after Devtas. So why Bhagwan is giving Amrit to Devtas? Because Devtas do seva of Bhagwan. सारे देवता सेवा करते हैं और असुर क्या करते हैं? So because Devtas do seva of Bhagwan, they provide air, water, food, everything. But what Asurs do? Asur never do seva of Bhagwan. And that's why Bhagwan in return is giving Amrit to them. But in between sun and moon, one Asur was sitting in between them, and then sun and moon said that this is Asur and he drunk the Amrit, and Mohini took the chakra and cut the throat of that Asur, and split into two parts, that is Rahu Ketu. जयराम जी की ऊर्जा मतलब समझिए, एक बार राहु किसके पीछे लग गया ना तो छोड़ता नहीं। यही राहु और केतु सूर्य और चंद्र को भी ग्रास करते हैं। So this Rahu Ketu tries to eat sun and moon. Because of that only sun eclipse and moon eclipse took place. असुर समझ गए। So now Asur understood the planning and plotting of Devta and Bhagwan. So now
Amrit is being drunk by the Amrit, they are now more stronger than Asurs, and after that they have become more stronger. That's why they had a war with Asurs and took their heaven and everything from Asurs. इससे कल पौने 4 बजे यहाँ पर आ जाऊंगा और 4 बजे मैं यहीं से आरंभ करूंगा। So now we are going to hear Harikatha tomorrow about Krishna Leela and everything, and what what Asur did after this. We will be listening tomorrow. देखो मैं 7 बजे पूरा छोड़ दिया समय का पक्का बड़ी तपस्या लगी मेरे को 4 घंटे की कथा में 15 मिनट में सुना दी।